हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे मार्केट के बारे में। जो उथल-पुथल हुई है आज, देयर इज़ बीन अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड वॉलेटिलिटी। और लास्ट में तो 1600 पॉइंट्स का फॉल हो गया आज। दैट इज़ बिकॉज़ ट्रंप ने वापस बोल दिया कि एक तो ईरान का जो सीज़ फायर था, दैट इज़ नो मोर इन एग्जिस्टेंस, सीज़ फायर ख़त्म हो गया, ऐसा ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया। एंड ही डज़ नॉट वांट टू नेगोशिएट आल्सो अगेन विथ ईरान। सो फाइनली द डील समवेयर इज नॉट हैपनिंग। तो ये जब न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है, आई थिंक एट अबाउट 2 in the afternoon, यू सी दैट द मार्केट इज फॉलिंग। 1600 पॉइंट्स का अचानक से फॉल आ जाता है। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर वरीड कि अब क्या होगा, ये वॉर एस्केलेट होगी और या फिर हाउ द थिंग्स विल वर्क बिकॉज़ द मार्केट इज़ गोइंग डाउन अगेन। तो ये एक स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम हो गया है कि आप यू गो अप टू 99 एंड देन वो ट्रम्प नाम का स्नेक है वहाँ पर, इट इज़ देयर एंड देन इट ईट्स यू अप। फिर आप वापस स्टार्ट करते हो 1 से, स्नेक्स एंड लैडर्स में जो होता था। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। बट अब यही कहूँगा कि यू हैव टू गेट यूज्ड टू दिस ट्रम्प्स अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। ये जो ट्रम्प का है, यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। ही इज़ देयर इन ऑफिस। आई थिंक बाय द एंड ऑफ 2028 2029 में वापस से यूएस में इलेक्शंस होंगे। सो आई थिंक यू हैव टू अज्यूम दैट कि ये ऐसा ही चलता रहेगा, तभी यू विल हैव सम पीस ऑफ माइंड। तो जब भी आपका जो योर एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी लेस, देन आई थिंक थिंग्स वर्क वेरी वेल फॉर यू। तो यही समझ के चलना है कि वॉलेटिलिटी रहेगी एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। ये सब ध्यान में रख के आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। एंड आई डोंट थिंक सो अ लॉट ऑफ स्टॉक्स विल गेट अफेक्टेड, डिपेंड्स कौन सा स्टॉक आपने लिया है। बट देन यू लुक एट ईवी, एथर हैज गॉन अप टुडे। तो एथर आई थिंक इट्स गिवन अबाउट 3.5-4% का अप मूव दिया है उसने। वो है ना, ऊपर जा रहा है। एंड देन यू हैव गॉट फार्मा ऑल्सो डूइंग वेल। फार्मा में एक टेलविंड है। यू हैव टू लुक एट द कंपनीज दैट आर डूइंग वेल, जिनमें ग्रोथ है। सो यू हैव सकर फार्मा, दे से दे विल ग्रो एट अबाउट 40%। मार्क्सन्स तो ठीक है, इट वाज 18-20% का कंपाउंडिंग ग्रोथ इंजन, यूज्ड टू डू वेल, बट ठीक है, दैट आल्सो हैज कम अप। बट देन इन जनरल आई एम सेइंग कि हर फार्मा कंपनी में एक टेलविंड है, यू हैव टू चूज द बेस्ट। नो recommendation here, but Sakar Pharma is something you can look at, and then Cenoris Pharma is doing well. So these kind of stocks, तो pharma तो कभी रिसेशन में नहीं आएगा। people will always need medicines, will not get affected because of the war तो बाहर चला है। हो सकता है कि वैल्यूएशन कम हो जाए, the stock price goes up and down, that is the only thing that will happen. And you look at consumption also, जैसे Krishival Foods also is something what I like, मतलब it's a good business, nuts and ice cream का मेल्ट एंड मेलो वो सेल करता है। स्मॉल कैप कंपनी है, एंड देन इट इज़ ऑल्सो लुकिंग टू ग्रो वेल, दे आर गिविंग अ गाइडेंस ऑफ 50%। सो दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस जहाँ पे यू फाइंड दैट there's immense scope and these are your routine businesses, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अगर आप ऐसा बिजनेस होल्ड करोगे तो what happens is, even if the market is not having any momentum, अगर हमारे रिजल्ट्स जो आने वाले हैं, the next quarter results that are supposed to come, so it'll be Q1, right? तो Q1 के जब रिजल्ट्स आएंगे, तो जब वो आ जाएंगे तो ऐसे स्टॉक्स they'll have momentum. Even Sky Gold is gone up today, and of course ज्वेलरी स्पेस इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। अब उसमें टाइटन ने थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे दिया कल्याण ज्वेलर्स की कंपैरिजन में, एंड टाइटन इज डूइंग दिस ग्रोथ ऑन अ बिगर बेस, सो दैट पुट्स टाइटन ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो ये सब कंपेयर करना पड़ेगा। बट देन अगेन ज्वेलरी स्पेस इज ऑल्सो लुकिंग गुड। सो लॉट ऑफ स्पेसेस है यहाँ पर फॉर यू टू डू investments. So what I say is that this is actually a good opportunity for India. Of course this might sound a bit contradictory कि ये क्या बोल रहा है, but then India has done always better when it is pushed into crisis. तो अब energy का crisis आ गया, they've understood that a lot of forex will outflow. That is why government is focusing on making sure that the EV transmission is very smooth. They are helping Ether by giving them the right platform, giving them the right policies, है ना, ये clearance होता है, policies होती है, this is very important. You look at any developed country today, look at Singapore, Lee Kuan, he has given beautiful policies for supporting these businesses due to which they have grown, ठीक है। you look at China में तो we know that it's a one party, but
but then only one party, but then you look at the policies they have made, which are very business pro. सो ये सब करने के लिए उन्होंने मतलब मैन्युफैक्चरिंग को इतना तरस दिया चाइना, तो वो सब हमें करना पड़ेगा, एंड आई थिंक वी आर स्लोली गेटिंग देयर, एंड थैंक्स टू ट्रम्प एंड द वॉर, I think India will do much better. We should will learn a lot from this crisis, और अगर ये crisis नहीं होता तो इतना acceleration नहीं आता. You look at Syrma SGS, you look at GNG Electronics, GNG went up today. अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, लेकिन मैं ये सब बता रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो दीज आर द काइंड ऑफ बिजनेसेस दैट विल बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन. और एमसीएक्स भी एक अच्छा स्टॉक हो जाता है अगेन टू प्ले दिस कमोडिटी बुल रन इफ दिस कंटिन्यूज, द वॉर कंटिन्यूज. सो यू नो एनीथिंग दैट गोज अप, तो क्रूड अगर ऊपर जाता है तो एमसीएक्स बेनिफिट्स, गोल्ड सिल्वर गोज अप देन एमसीएक्स बेनिफिट्स, ऑल्दो गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट लुक दैट बुलिश. तो एमसीएक्स एक अच्छा प्ले हो जाता है, जो जाता है आपके पोर्टफोलियो में. यू नो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव दैट वे. आई थिंक रियल एस्टेट इज ऑल्सो डूइंग वेल इन इंडिया, फेयरली वेल. और फिर उसके अंदर यू कैन लुक एट फ्यू स्टॉक्स हियर एंड देयर, एंड यू हैव गॉट दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो. कार ट्रेड हो गया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी कट. यू नो अ लॉट ऑफ cars have been bought, especially in the second hand segment also. You know a lot of interest is growing because of this ethanol वाला issue जो है उसके वजह से. You know a lot of people are preferring to buy that second hand vehicle also. You know they don't want to go for a brand new vehicle. So a lot of attraction for this car trade, and you know the auto industry seems to be in momentum. तो ऐसे businesses लेने, and I think war is only a distraction. Don't worry. If assume that Trump is going to keep doing this till 2028, ये करता रहेगा, यही समझना है हमें, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा पोर्टफोलियो बनाना है. एंड आई थिंक यू कैन स्टिल मेक अ लॉट ऑफ मनी. बजाज फाइनेंस मेड अ लॉट ऑफ मनी इन द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. 2008-2009 में बजाज फाइनेंस वेंट अप बाय मल्टीपल टाइम्स. इवन दिस फाइनेंशियल्स लुक वेरी गुड, स्पेशली द गोल्ड लेंडिंग प्लेयर्स. अगर आप उनको देखते हो तो यू नो दे आर डूइंग वेरी वेल. बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस स्टिल लुक्स गुड, बजाज फाइनेंस लुक्स गुड, टाटा कैपिटल इज लुकिंग गुड. तो ये लेंडिंग स्पेस भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, बिकॉज यू नो दिस कॉर्पोरेट बैलेंस शीट जो है वो लेवरेज नहीं है, उनको लेवरेज भी लेना है. एंड यू नो एंड दैट इज ऑल्सो देयर. सो केपेक्स ऑल्सो इज सपोज टू हैपन. So economy is looking, you know, to fire from all cylinders. Shaktikanta Das, ex RBI governor, recently said that India is very close to touch that 8% growth ka mark. Now a lot of people might debate about the numbers, but I think India can definitely grow at 8% if the government is willing to come up with the favorable policies. Already वो कर रहे हैं बहुत कुछ. You know, I think one has to appreciate as to what is being done. So I think this last moment का जो crisis आया है हमें suddenly because of this war, we have understood our weaknesses and we need to cover them. And I think equity market will benefit immensely because ये एक स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है. सेमीकंडक्टर्स के लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है. इमेजिन दैट वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स. ऑफ कोर्स दे हैव स्टार्टेड नाउ, टाइम लगेगा इसको, बट यू नो यू हैव टू स्टार्ट समथिंग एट द फर्स्ट प्लेस, तब जाकर आप कहीं प्रोग्रेस करोगे. सो अगेन गुड मूव्स बाय द गवर्नमेंट. दे आर वेरी प्रोएक्टिव, दे हैव रियलाइज्ड द नीड ऑफ द आवर. एंड ऑफ कोर्स दिस एआई वाला जो ये है ना थियोरी की we lose a lot of jobs and AI is going to take all of that. You know, I think this is again a theory hai, or this is not fully true. I think a lot of IT stocks also can get re-rated. IT stocks पे मैं कोई recommendation नहीं दे रहा हूँ. I'm not telling you to go and buy those IT stocks. I am completely avoiding IT stocks because you know I'm not very comfortable with the वैल्यूएशंस. बट मैं ये बोल रहा हूँ कि एआई की वजह से बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स जो आईटी से रिलेटेड भी नहीं है, यू नो समथिंग लाइक कार ट्रेड आल्सो फेल बिकॉज ऑफ दिस नरेटिव दैट एआई इज गोइंग टू टेक ओवर एवरीथिंग. और वो भी यू नो मार्केट अज्यूम्स दैट सम स्टॉक्स आर आईटी, ऐसे हो जाता है स्पिल ओवर इफेक्ट. तो ये नहीं समझना है कि एआई की वजह से सब खत्म हो गया. एआई इज नॉट दैट इंटेलिजेंट. Imagine you have a legal case, you know, you need a lawyer to really
help you out with that, to choose between the options. Because AI is not that intelligent. AI अभी उतना intelligent नहीं हुआ है कि you can just ask AI and then get things done. It is not that easy. Even when it comes to investing, इतना आसान नहीं है कि आप AI को पूछ लो. हाँ, you can use it as a tool to decipher the data, collect the data which is there at one source. वहाँ से आप data collect करके analyze करने के लिए AI आपको help कर सकता है. But then I think we are very far away from the day that AI is going to take all our jobs. I think ये जो narrative है जिसको AI का bubble भी बोलते हैं, I don't know if this is the right way to put it, but then I think this is overblown, and the valuations will again come back again. Small caps and mid caps look very attractive. 25% का growth mid cap में, 20% का average growth small cap में. So this is what it is. And do not panic. Portfolio बनाते रहना है. You don't stop going to your work because there is a war outside. We don't care. We just keep doing what we are doing. तो वही करते रहना है. Follow the process and do not get distracted. And definitely you will make money. आज नहीं तो कल पैसा बनेगा. अगर 2026 में नहीं बनता तो 27 में बनेगा. 27 में नहीं बनता तो 28 में बनेगा. And definitely we're going to make money. Indian markets look very attractive right now. बहुत सारा पैसा ये जो साउथ कोरिया हो गया है ना, एंड देन अदर कंट्रीज, अदर एशियन कंट्रीज जो है वहाँ पर पैसा लग गया. एंड आई रिमेंबर क्लियरली दैट 2024 में जब इंडिया बढ़ रहा था, 23-24 में जब इंडिया का मार्केट बढ़ रहा था, ऑल दिस फॉरेन मार्केट्स डिड नॉट मूव एट ऑल. एंड दैट इज व्हाट ऑल द फंड मैनेजर्स वर वेरी अप्रीहेंसिव. इंडिया के फंड मैनेजर्स वही बोल रहे थे कि अगर ऐसा ही होता रहा तो विल हैव दिस करेक्शन फेज, मतलब एक लैग फेज आ जाएगा, मार्केट साइडवेज चला जाएगा. एंड दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपेंड. तो यही होना था. 2024 सितंबर के बाद आई थिंक वी हैव नॉट गॉन अप. That was the time we touched the high. We are sitting on 2026 July, so maybe another 6 months and market has to take off. अगर रिजल्ट अच्छा आता है किसी कंपनी का तो क्या होगा, एक क्वार्टर नहीं चलेगा स्टॉक, 2 क्वार्टर नहीं चलेगा, बट थर्ड क्वार्टर इट हैज़ टू रन. द मार्केट्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग जिसको बोलते हैं. अगर ईपीएस बढ़ रहा है आपका और सेल्स बढ़ता है और पैट आता है तो अल्टीमेटली द स्टॉक हैज़ टू गो अप. एंड यू लुक एट स्टॉक्स लाइक क्यूपिड. ऑफ कोर्स मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन. इट्स गॉन अप वेरी हाई. पी देख लो आप, उसका आज भी बढ़ा है क्यूपिड जैसा स्टॉक. तो सो यू लुक एट दैट ग्रोथ स्टॉक नैरेटिव, तो दे विल कीप गोइंग अप इफ द एग्जीक्यूशन इज देयर. सो मार्केट obviously knows more than you, so you have to be at the right place at the right time. Stock selection has to be very superior and money can always be made even in this kind of market. तो स्टॉक सिलेक्शन करने का यही पर्पज है कि आप पैसा बनाओ, हर सीजन में पैसा बनाओ. वॉर है नहीं है, पैसा बनेगा. इन्फ्लेशन है, पैसा बनेगा. इंटरेस्ट रेट्स का इशू है, पैसा बनेगा if you are very good with the stock selection. And you look at Peter Lynch also. If you read about him, Peter Lynch also made a lot of money even during these times, when he had this depression, great depression, and then many crises also came during his time. I think he had a career of 28-29 years का जितना भी उसका करियर था उसमें उसने कुछ 29% कीगर बनाया उसने. ही इज़ अ सुपीरियर इन्वेस्टर कंपेयर टू इवन वॉरेन बफेट, एंड ही यूजेस दिस ग्रोथ वाला स्ट्रैटेजी. अगेन ही यूज्ड टू बाय दिस हाई पी स्टॉक्स व्हिच यूज्ड टू कीप रनिंग इवन इन दिस बैड टाइम. सो ऑफ कोर्स वॉरेन बफेट इज रिचर बिकॉज ही हैड मोर रिसोर्सेज कनेक्ट था, एंड देन ही इज अ गुड बिजनेसमैन. दैट इज व्हाई यू सी वॉरेन बफेट इज मोर पॉपुलर बिकॉज वो फोर्ब्स पर भी आता है. ही इज अ बिलियनियर एंड ऑल दैट. But then you look at stock picking skills. If you really want to learn investing, then Peter Lynch is the person you should follow. And of course, Ian Casel is one you can follow on Twitter. Ian Casel, I repeat the name again. He's very good with investing. So he understands this game कि ये mid और small cap या micro cap को कैसे लेना है. How do you buy that stock and then stay till the time the stock goes up. Be in that momentum. So you don't think much. अगर stock ऊपर जा रहा है तो आप ये नहीं सोचोगे कि वो expensive हो रहा है and you sell it off. You don't do it unless the stock tells you to sell. वो कब होगा जब एग्जीक्यूशन जो उसने बोला है, जो गाइडेंस बोला है वो मीट नहीं करता. There is a big difference. Or you find that there is a corporate governance issue, or you find that the growth is dying down, or you find that management comes and says कि growth saturate हो गया. So these kind of signs will make sure that you start offloading the stock.
तो तभी करना है, अपने मन से नहीं करना है। लेट द स्टॉक गिव यू अ चांस टू सेल इट, अदरवाइज़ यू जस्ट राइड द मोमेंटम एंड यू मेक मनी। आप क्यूपिड को ही देख लो, अगर कोई बीच में बेच देता तो इतना पैसा नहीं बनाता। डेफिनिटली देयर इज़ समथिंग हैपनिंग इन द स्टॉक in terms of execution and the management doing the right things. So that is what it is, change of management ने ये growth को लाया है। So don't use a lot of brains looking at valuations, it will get adjusted. So let the stock find reasons for you to sell. That is what it is. So don't worry, and I think you should continue with the daily routine. Distract नहीं होना है, keep building that portfolio, and definitely a lot of money to be made. I don't think so. Tweets of Donald Trump, can affect the Indian stock market. Of course, volatility आ सकती है for short term में, but I think long term growth is definitely there. So don't have any doubts. Lots of opportunities in this mid and small cap space, and keep tracking, keep reading. The more you read, the more opportunities you will get, and the more multi baggers you can have in your portfolio. That is only because you keep tracking them and reading them. Do not be lazy. Keep reading, and be with people who discuss stocks, who understand the business, who talk about business. And I think you can make a lot of money in the next 10, 20, 20, 30 years. Yes, that is all for today. Best of luck. Keep investing, and do not get distracted by all the news, and avoid this negativity. Thank you.